Reserve Bank of India Act 1934. You all know that major topics we are covering from this act that are very important and have 100% chances to come in different types of exams. So, moving to the next important one is what are banking regulations and supervision? अंडर आरबीआई एक्ट के अंदर आपको बैंकिंग के अंदर क्या रेगुलेशंस की रिगार्डिंग फंक्शन है और क्या सुपरवाइजरी फंक्शन है वो आज इस सेशन में हम देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन विदाउट वेस्टिंग टाइम. द पावर टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज द बैंक्स हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू आरबीआई. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऑलरेडी ये पावर दी गई है कि वो डिफरेंट टाइप्स के बैंक्स को सुपरवाइज भी करे और साथ में ही उनके अंदर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, रेगुलेट करने के लिए जितनी भी पॉलिसीज हैं उन सबको फ्रेम करेगा. सो आरबीआई, एज यू ऑल नो, इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड दैट्स व्हाई दिस सेंट्रल बैंक हैज ऑल पावर टू मेक अ रोल ऑफ सुपरवाइजर एंड अ रेगुलेटर अमंग ऑल द बैंक्स. आरबीआई हैज फॉलोइंग पावर्स. अब जितनी भी उनकी सुपरवाइजरी और रेगुलेटरी रोल के अंदर जो पावर्स हैं वो हमने इस सेशन में एक लिस्ट के थ्रू मेंशन की है एंड यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर योर ओन नोट्स. सो आरबीआई हैज द फॉलोइंग पावर्स फॉर द पर्पज ऑफ रेगुलेशन एंड supervision of banks. Right, my dear students? So what are those powers? Let's discuss one by one. The first is power to issue licenses and also to cancel the licenses of banking companies. जो various types के banks हैं या फिर banking companies हैं, those who want to come in the field of banking line, they first have to obtain a license and that license giving power is to whom? To RBI. तो उनको RBI के पास जाना पड़ेगा और RBI से उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा टू स्टार्ट देयर ब्रांच, टू स्टार्ट देयर बिजनेस. प्लस जो लाइसेंस की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, इफ एनी कंपनी गो बाय अगेंस्ट देम, कोई भी उनके अगेंस्ट जाती है उन टर्म्स के अगेंस्ट, तो उनके लाइसेंस को कैंसिल करने की भी पावर किसको दी गई है? आरबीआई को. Right, students? So RBI is not only the giver of license, he is also the taker of that license. Then next is power to appoint the chairman and managing director of dash companies. जितनी भी बैंकिंग कंपनीज हैं जो कि मार्केट में ओपन होने वाली हैं या जिन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है, इट्स नॉट जस्ट ओनली टू ऑब्टेन द लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई. If there occurs any situation or emergency, in that situation also RBI के पास पावर है कि वो उस बैंकिंग कंपनी के चेयरमैन को भी अपॉइंट कर सकते हैं प्लस वहाँ के एमडी को भी वो अपॉइंट कर सकते हैं. तो आरबीआई का यहाँ पर रोल क्या आ गया? एज अ रेगुलेटर ऑल्सो. राइट. द नेक्स्ट पावर गिवन टू यू ऑफ आरबीआई इज पावर टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज. बैंकिंग कंपनी का जो पूरा बोर्ड होता है जिसमें हमारे सारे डायरेक्टर्स की सिटिंग होती है, इफ देयर अकर्स एनी वैकेंसी ऑफ एडिशनल डायरेक्टर और एनी प्लेस इज blank, then RBI also has the power to fill that place with by appointing the additional directors. Right? They complete the banking company's boards. Then the next is power to dash the chairman, power to remove the chairman and managing director. As I said, if RBI के पास पावर किसी चीज को अपॉइंट करने की है तो आरबीआई के पास पावर उनको रिमूव करने की भी है, माय डियर स्टूडेंट्स. सो इफ दे कैन अपॉइंट द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इन सर्टेन सिचुएशंस, दे कैन ऑल्सो happily remove the chairman and managing director if they go against to some rules, or if there occurs any that a serious emergency, they can remove them. Right? Then we have next power of RBI is to supersede the board of banking companies. If banking companies का जो पूरा board है वो by chance for any reason is not up to the mark और their any qualifications से वो lack करते हैं, तो उनके बोर्ड को भी वो सुपरसीड कर सकते हैं, कंप्लीट बोर्ड को भी रिमूव कर सकते हैं. ऑल राइट. देन द नेक्स्ट पावर ऑफ आरबीआई इज
power to issue dash to banking companies, power to issue the directions, what role they will play, what they have to do, complete instructions you can say are issued by the RBI to various banking companies in the public interest, because public interest matters the most. और अगर आरबीआई को लगता है कि कोई बैंकिंग की पॉलिसी या बिजनेस ऐसा है जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा सकता है, या इट कैन बी अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ बैंकिंग पॉलिसी, or to prevent dash, or to prevent the affairs of any banking companies being conducted in a manner which are detrimental to the interest of the depositors, then in that situation RBI comes as a protector. आरबीआई एक प्रोटेक्टर का रोल प्ले करता है और वो वेरियस डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं टू द बैंकिंग कंपनीज टू एंड प्ले फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट एंड टू फुलफिल देयर रोल्स ऑफ पब्लिक ड्यूटीज which is most. Next RBI rule is power to issue the directions to the banking companies for resolution of stressed assets. Right? The assets which are stressed, then in that case for banking companies RBI come with a resolution and they instruct those banking companies to propose a resolution. Right? The last power which I have enlisted in here is power to inspect the banking companies on its own. कभी भी whenever there any need arises on its own motion, on discretionary power can inspect the banking companies, or at the dash of the central government, or on the instance of the central government they can go and check the balance of banking companies, what their roles are, regulations are, and what actually they are doing for the public interest. And if something detrimental, then the RBI can take serious steps and can instruct the banking companies to come and play for the policies which are in the interest of the public. Right, my dear students? So these are the various powers that are given to RBI, and RBI self in its own motion can play a role of regulator and supervisor for the public, for various banking companies. And in this session I hope you understood all the major functions and powers of RBI. I hope you enjoyed today's session, you gained a lot of information. Stay tuned for the next one. Till then, have a good day. Thank you.